Welcome back again in the next video of the lesson water as a natural resource. In that lesson we are discussing about the natural resources. So not only water is a natural resource, such like the many kind of the natural resources are there, such like that air is also natural resource, minerals are also natural resource, then water, sunlight, oxygen, these all are the natural resources, soil, that all are petroleum fuels, all this. So now natural resources means what? The things that we are getting from the nature and we are using them. So such things are known as resources, and such resources are getting from the nature, that means what? They are natural resources. So now the natural resources are divided into two main points. First is renewable natural resources and the non renewable natural resources. So renewable means what? We can create it again, or it can be extinct, or it remain. On that basis we are dividing it into the two different parts, renewable natural resources and non renewable natural resources. For example, renewable natural resources, having the example of sunlight. Sunlight is renewable, means it is not extincting exist मतलब क्या होता है ये, मतलब extinct नहीं होगा, ठीक है, मतलब ये हमेशा रहेगा. सो इसको हम बोलेंगे रिन्यूएबल. एंड नॉन रिन्यूएबल एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स. So fossil fuels are having limited in amount, and they are after some period of the time they are limited, okay. So that is nothing but the non renewable resources. So now they are again divided into the two parts, renewable natural resources such like that, unexhaustible renewable resources, and exhaustible renewable resources. So inexhaustible renewable resources are having sunlight, water and air, and exhaustible renewable resources are soil, forest and groundwater. Now in non-renewable natural resources are also divided into two parts, recyclable and non-recyclable. So recyclable are of the minerals are recyclables, and in non-recyclable fossil fuels and the top layer of the soil, these are the non-recyclable renewable resources. So I hope you are getting this, what is by renewable resources, what is by non-renewable resources. So now we are discussing about the water, okay. So water is a natural resource, and we know that it is a renewable resource, and on the earth 71% of the water is present, but from this 71% we can use only 2 or 3% of the water as for the drinking, okay. So these all part of the water are not usable, okay. So uses of water in various types such like agricultural, medicines, chemicals, producing electricity, transportation, then for fire extinguishing, surfing, swimming, scuba diving, various sports such like that, in this field, or cooking, washing, cleaning, bathing, ये सब के लिए हम क्या करते हैं, वाटर का यूज़ हम करते हैं. सो आई होप यू आर गेटिंग दिस. Now different forms of the water we are discussing. So first is the solid. Solid means it is ice and it having solid form of the water. Then after giving heat to the solid ice, then it converted back into the liquid, and after we are giving again heat to the liquid water, then what happens? It is converted into the water vapor, okay. By reversing that process, by decreasing the temperature, we can again liquefy this water vapor into the liquid form, and again I am decreasing the temperature, then it is converted back into the solid form. So we know that what is the freezing point of the water, what is boiling point of the water, okay. Freezing point is at 0 degrees Celsius, and boiling point of water is at 100 degrees Celsius. So that's all related with the water. Now
So there are three phases or the three forms of the water: solid, liquid, and the gas. Now water cycle we are discussing. What is my water cycle? In that place, okay. So okay, this is the water cycle. We know that from the lake, from the ocean, from the sea, water is getting vaporized and it is condensed and forms a cloud. That process is known as condensation. Then this water vapor makes the cloud, and this cloud again um, goes in the process of precipitation, and the water vapor again converted back into the water, and this water are falling down on the surface of earth, and this again mix in the groundwater, surface water, in the all resources of the water. Then again what happen? Transpiration uh, is one of the uh, process that is also helpful for the evaporation. So now this all the process इससे बनते हैं क्लाउड। क्लाउड फिर और ट्रांसपीरेशन भी यहाँ पे यूज़ होता है। प्लांट जो ट्रांसपीरेशन करते हैं, वाटर वेपर बनाते हैं, ये भी क्या होगा, इससे भी क्लाउड बनने में इसको हेल्प होंगी। फिर यहाँ से क्या होगा, ये प्रेसिपिटेशन प्रोसेस में जाएगा। जैसे ही क्लाउड कोल्ड हो गया तो ये फिर से क्या करेगा, वाटर वेपर को कन्वर्ट बैक करेगा वाटर में, और ये वाटर फॉल होगा इन द फॉर्म ऑफ रेन। ठीक है, सो दैट इज़ नथिंग बट द water cycle. Now next part is that sources of water. So there are mainly three sources of water. First is rainwater, second one is surface water, third one is underground water. ठीक है, so rainwater, as we have already discussed in the water cycle, so it is the process of distillation, natural distillation we are calling as a रेन वाटर। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है कि जो वाटर है हमारा इवेपोरेट होके फिर से कंडेंस होता है, और इसके वजह से यहाँ से जो बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सब है, इनका भी फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, दैट इज़ द नेचुरल डिस्टिलेशन प्रोसेस। नाउ सेकेंड इज़ द सरफेस वाटर। सरफेस वाटर में क्या आता है कि एज वी नो 70% ऑफ द अर्थ इज़ covered with the water. ठीक है, but it is not usable. Why? Because it is very salty. It is not we cannot use that water for drinking. ठीक है, so surface water having a large amount of the salty water, ठीक है, और marine water we can say. Now this surface water is also a form of the sources of water, but इसमें भी कुछ है ना ऐसे sources है जहाँ से हमको pure water मिलता है। For example pond, lake, स्ट्रीम्स, रिवर, देन बोरवेल, वेल, यहाँ से हमको जो वाटर मिलता है ये प्योर फॉर्म ऑफ वाटर हमको मिलेगा। ठीक है, सो दैट इज़ द सरफेस वाटर। नाउ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर क्या होता है? सो ग्राउंड वाटर वी कैन बेटरली अंडरस्टैंड with the example of this diagram. That is the water table. So in that you can see infiltration, sand and grave, salty layer, aquifer, then fractured rock, aquifer, water stored underground in the crack and the pores. So ये सब यहाँ पे आपको लेबलिंग आपको दिख रहा है। सो यहाँ पे होता क्या है, जो रेन वाटर फॉल होगा सरफेस पे, ये क्या करेगा, जो भी क्रैक्स वगैरह दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये ग्राउंड वाटर में इसमें चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसका फिल्ट्रेशन वो ये प्रोसेस होके इसका हमको एक लेयर मिलेगा जिसको हम बोलते हैं एक्वीफायर। ठीक है, सो इसी से बनता है ग्राउंड वाटर। सो जितना ज़्यादा रेन वाटर रहेगा उतना ज़्यादा हमारा ग्राउंड वाटर का लेवल भी बढ़ेगा। सो ऑन दैट बेसिस ऑल ट्रीज आर गेटिंग वाटर फ्रॉम द ग्राउंड वाटर। ठीक है, सो दैट इज़ related with the groundwater. So then next topic is that depletion of water table. Depletion means what? कम होना। ठीक है, वाटर का जो लेयर है ये कम होना। ये क्यों कम होता है? is that is having two reason. First is the population expansion or overpopulation, then second one is the pollution. ये मेन दो रीज़न है, बाकी ऐसे बहुत सारे रीज़न है इसमें। फर्स्ट हम देखेंगे पॉपुलेशन से क्या होगा।
So as the demand of water is increases because the growth of population, so because of that water is using very large using in the large amount, and the sources of water is getting limited. So that's why it is the also most important factor affecting on the water level. Next is that pollution से भी क्या होगा कि जो sewage water है, then air pollution, acid rain, डिस्चार्ज फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, डंपिंग इनटू द वाटर बॉडीज़। सो ये सब चीज़ें की वजह से क्या होता है, जो वाटर अच्छा था पहले वो क्या होगा, पोल्यूटेड हो गया, और इसके वजह से हमको वाटर पोल्यूशन दिखता है। ये भी एक बड़ा रीज़न है वाटर के लिमिटेशन के लिए। नाउ अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये अफेक्ट करती है किस पे, वाटर के लेवल पे। सो व्हाट इज़ मीन बाय अर्बनाइजेशन मीन्स व्हाट, कि जो पहले जो फॉरेस्ट एरिया था उसको कट करके हम वहाँ पे सिटीज़ बना रहे हैं, बड़े बड़े मतलब इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं। ये सब की वजह से अर्बनाइजेशन जो प्रोसेस हो रहा है ये भी एक रीज़न है ग्राउंड वाटर हमारे वाटर लेवल को कम करने का। नाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक रीज़न है, जहाँ से अभी हमने देखा था कि जो वेस्ट मटेरियल है ये प्योर वाटर में छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो लेयर है वाटर का ये पोल्यूटेड हो जाएगा। ठीक है। नाउ सेकेंड, फोर्थ वन और फिफ्थ वन इज़ दैट डिफॉरेस्टेशन। सो डिफॉरेस्टेशन वी नो दैट इन द deforestation what happens, the forest in the forest trees are cutting, and there are urbanization is occur in that area. So that because of that also what happened, the level of water is decreases. Now global warming means what, the temperature of the globe is increases year by year. So that is nothing but the global warming, और ये भी एक रीज़न है वाटर लेवल को कम करने के लिए। नाउ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर, ये तो है ना एक ऐसा रीज़न है जो कि हमारे हाथ में है। ठीक है, बट हम इस पर केयर नहीं करते, मतलब जितना हमको यूज़ है उससे ज़्यादा हम वाटर यूज़ करेंगे और बाकी का फेंक देंगे। ओके, सो ये भी एक ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो ग्राउंड वाटर का हम करते हैं, ये भी एक रीज़न है वाटर को कम करने का। नाउ ये सब जो रीज़न थे ये थे हमारे वाटर को कम करने के, ख़राब करने के, पोल्यूटेड करने के। बट इसको हम क्या करेंगे, इसको प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है। सो कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट नाउ अ डेज। सो व्हाट हैपन्स, for water we are using in various purposes like brushing, bathing, in that household activities. So that is the water is getting in use, but we cannot recycle it, we cannot doing filtration of that water. So that's why some methods are there. So first is the rain water harvesting. सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है कि जो रेन से हमको वाटर मिलता है, ठीक है, इसको अगर हमने रिसाइकल किया, मतलब इसको हमने वेस्ट होने से बचा लिया। हमने क्या किया, ऐसे एक टैंक बनाया जिसमें जो भी हमारे जो रेन वाटर होगा, जो कि पानी पहले हम छोड़ देते थे ऐसे ही, उसको हमने टैंक में सेव किया और वो उसको फिर फिल्ट्रेट करके हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा सा यूज़ होता है, इसी को हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। So I hope you are getting this all. We will meet in the next video.